2, 3. Today we will discuss combination of pulleys. When a heavy load is to be lifted or shifted from one place to another, we require a pulley system of mechanical advantage much more than two. See, in our previous pulleys, in our previous system, what we have seen that there are two types of pulley. One is single fixed pulley, which is used to uh, to lift a load in our convenient direction, and number two is single movable pulley. In case of single movable pulleys, mechanical advantage is theoretically 2, but practically or in case of actual machine it's less than 2. तो अभी क्या चाहिए अगर हम लोगों को हेवी लोड लिफ्ट करना है, in that case mechanical advantage has to be much more than 2, and that's why we are going to use more than 1 or 2 pulleys. This is the main thing that we are going to study. See, again I am reading the same thing. When a heavy load is to be lifted or shifted from one place to another, we require a pulley system of mechanical advantage much more than 2. So a single movable pulley is not enough, right? A combination of several pulleys with one or more strong thick string or rope is then used. Combination of several pulleys, that may be one or more, with one or more strong thick string. ये one मतलब किसके लिए? वन है स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग के लिए, मतलब एक भी रोप हो सकता है, अदरवाइज देयर आर मोर देन वन रोप. ठीक है, इज देन यूज्ड. द कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इन टू वेज. ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, ये दो तरीके से हो सकता है. नंबर वन, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली and several movable pulleys attached to the same rigid support, and number two is using several pulleys in two blocks. You can use several pulleys in two blocks, of which the lower block is movable and the upper block is fixed, known as block and tackle system. See, this is the combination of pulleys. Here is the first one, using one fixed pulley and other movable pulleys. This pulley is fixed and these three pulleys are movable. That means A, B, C जो पुली सिस्टम है वो मूवेबल है, एंड नंबर डी जो सिस्टम है ये फिक्स्ड है. नाउ मैकेनिकल एडवांटेज. जनरली मैकेनिकल एडवांटेज इज 2 to the power n in case of one fixed pulley and other movable pulleys. How does it come? Let's see. In equilibrium मतलब बैलेंस कंडीशन जब है, ठीक है, लोड एफर्ट बोथ आर इन बैलेंस्ड कंडीशन, देन एफर्ट विल बी इक्वल्स टू T3. वेरी सिंपल. सी है, एफर्ट जो है ना वो T3 का बराबर है एकदम. मतलब T3 मतलब ये जो थर्ड 3 नंबर जो पुली है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3. तो T3 में जो टेंशनल फोर्स है वही टेंशनल फोर्स हम बैलेंस करते हैं थ्रू एफर्ट, मतलब T3 equals to E. Very simple thing. Now the two segments of string passing over the pulley A supports the load L. इधर लोड एक्चुअली जो है वो L है. तो ये जो लोड है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है T में, T1 में और इधर का T1 में, दोनों साइड में, एक लेफ्ट में है एक राइट में है. ये जो लोड है, सपोज ये 50 kg का लोड है, तो ये 50 kg इधर होगा 25 kg और इधर होगा 25 kg. तो ये तो एक नंबर पुली है, इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है 25 kg. अभी दो नंबर पे कितना लोड आएगा 25 kg. ये जो 25 है ये डिवाइड होगा 12.5. फिर से ये जो 3 नंबर जो पुली है इसमें लोड कितना आ रहा है 12.5, फिर से ये डिवाइड होगा 6.25. मतलब एफर्ट जो है वो हमको 6.25 देना पड़ेगा. कितना लोड? जब कितना लोड होगा 50 लोड होगा. हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, राइट? देखो, the two segments of string passing over the pulley A supports the load L. Therefore tension T1 in the string is given as 2T1 equals to L, and T1 will be L by 2. Similarly, the two segments of string passing over the pulley B supports the tension T. So tension T2, ये जो T है ये दोनों में डिवाइड हो रहा है T2 एंड T2 में. So in this string
is given as 2T2 equals to T1. अच्छा, ये जो टेंशन होगा ना ये T1 होगा, T1, ये T1 डिवाइड हो रहा है T2 में, लेफ्ट एंड राइट में इक्वली डिवाइड हो रहा है. That's why initially they have declared that the condition has to be equilibrium. Then T2 will be T1 by 2 and T1 equals to L by 2, that we have already discussed. Okay, that will be L by 4. Now similarly the tension T3 in string passing over the pulley C is given as 2T3 equals to T2. ये जो T2 का जो लोड है ये T3 में डिवाइड हो रहा है, so 2T3 will be equals to T2 and T3 will be equals to T2 by 2. Hence L by 2 cube, that means L by 8. Now ये जो लास्ट वाला जो इक्वेशन है, from 4 L equals to 2 to the power cube into T3 into T3. Why? As because L by 2 to the power cube equals to कितना है? Equals to T3. T3, sorry, T3. T3, hence L will be 8 into T3. ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशनल फोर्स लगेगा उसके साथ हम सिंपली 2 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 पुली मूवेबल है, वही चीज हम देखेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव सीन दैट लोड इक्वल्स टू 2 to the power क्यूब बाई T3. तो 1 और 5 ये जो डिस्कशन है इसमें एफर्ट क्या आएगा? देखो एफर्ट पहले हम क्या बोले थे, एफर्ट इज इक्वल्स टू T by T3. effort equals to T3. Effort equals to E equals to T3, and here L equals to 2 3 into T3. Then T3 will be equals to L by 2 to the power cube. So simply we will substitute the value of T3 here. Yes, will we substitute the value of T3? Effort equals to L by 2 to the power 3. Hence mechanical advantage क्या है? Mechanical advantage equals to load upon effort. देखो लोड इधर मिल गया, एफर्ट भी इधर मिल गया, so load upon effort, then 2 cube into T3 divided by L by 2 cube. L by 2 cube, or you can say simply E equals to, sorry, this value we will not substitute this value, we will substitute this one, क्योंकि इसमें अगर फिर वही जगह पे आ जाएगा. देखो इसमें अगर E equals to T3 सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या आएगा? 2 to the power q. That's why I told mechanical advantage is 2 to the power 3. Mechanical advantage 2 to the power n, ये फॉर्मूला मैं बताया था. 2 to the power n, n क्या है? n is the number of movable pulley. जो movable pulley जितना रहेगा उतना ही mechanical advantage होगा. Is it clear to all of you? Now velocity ratio. As one end of each string passing over a movable pulley is fixed, one end of each string passing over a movable pulley is fixed. ये जो string है it's fixed. Okay, so the other end of string moves up twice the distance moved by the axle of the movable pulley. Now the interesting fact has come. See, ये जो string है, this side में जो string है ये fixed है, और इस साइड में जो स्ट्रिंग है ये मूवेबल है. अगर ये जो लोड है ना ये हम 10 मीटर लिफ्ट करें तो ये स्ट्रिंग कितना लिफ्ट होगा? देखो 10 मीटर यहाँ से इधर अगर जाएगा तो ये भी 10 मीटर जाएगा, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये 10 मीटर आएगा, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो भी 10 मीटर आएगा. मतलब इन केस ऑफ पुली ए
ये जो टोटल जो स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस हो रहा है वो होगा 20 मीटर। नाउ द थिंग इज दैट दिस साइड स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है, इस साइड में जो स्ट्रिंग है वो तो फिक्स्ड है, तो ये जो साइड है ये स्ट्रिंग फ्री है, मतलब ये जो 20 मीटर जो लिफ्ट होगा ना ये दिस साइड में लिफ्ट होगा। सी सो as one end of each string passing over a movable pulley is fixed, ये जो string है ये fixed है, so the other end of string moves up twice the distance moved by the axle of the movable pulley. If the load attached to the pulley A moves up by a distance x, मतलब ये जो लोड है ये अगर x डिस्टेंस में अगर लिफ्ट होगा तो T1 के लिए कितना, मतलब T1 मतलब पुली A में जो स्ट्रिंग है, सॉरी दिस इज नॉट T1, T1 इज अ टेंशनल फोर्स, पुली ए में जो स्ट्रिंग है वो कितना लिफ्ट होगा, वो होगा 2x। देखो क्या लिखा है, द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ पुली बी, यस द एक्सेल ऑफ पुली बी, ये जो लोड है ये तो 10 मीटर ऊपर उठ रहा है, मतलब T1 एक्सेल ऑफ पुली बी विल बी 2x। यस यस इन केस ऑफ पुली बी, भूल लो भूलभाल কেন বলবো, পুলি বি তে তাহলে এ উঠছে 20 মিটার, হ্যাঁ 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 ঠিকই তো ছিল। 1 2 take 3 velocity ratio, as one end of each string passing over a movable pulley is fixed, so the other end of string moves up twice the distance moved by the axle of the movable pulley. So the other end of string, see here, one end of the string is fixed, ए बी सी, ये जो 3 पुली है ना इसमें एक वन साइड का जो स्ट्रिंग है वो फिक्स्ड है, अदर साइड का जो स्ट्रिंग है वो फ्री है, राइट। सो इफ द लोड अटैच टू द पुली ए मूव्स अप बाय ए डिस्टेंस x, देखो क्या बोल रहा है, एज वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड दैट मीन्स द अदर साइड में जो स्ट्रिंग है वो जो फ्री है वो डबल डिस्टेंस मूव करेगा। देखो कैसे, नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट हैज कम, सी हियर, अगर लोड 10 मीटर लिफ्ट करना है तो ये जो T1 मतलब ए साइड में ये जो T1 जहां लिखा है इधर वो स्ट्रिंग कितना लिफ्ट होगा, इधर भी 3 मीटर लिफ्ट होगा, इधर भी 10 मीटर लिफ्ट होगा, मतलब ये जो ए जो पुली है ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, तो दोनों साइड में 10 मीटर होगा, लेकिन इस साइड में जो स्ट्रिंग है ये तो फिक्स्ड है, ये जो 10 मीटर और 10 मीटर जो है मतलब 20 मीटर, ये जो स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 20 मीटर। देखो पुली ए तो 10 मीटर ही जाएगा, मतलब यहाँ से जो 10 मीटर है उतना ही जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आएगा मतलब 20 मीटर होगा इन केस ऑफ बी, मतलब बी के लिए कितना आएगा 20 मीटर ऊपर आ रहा है, तो ये 20 मीटर सी के लिए कितना होगा, डबल 40 मीटर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, देखो अभी क्या बोल रहा है, as one end of each string passing over a movable pulley is fixed, so the other end of string moves up twice the distance moved by the axle of the movable pulley if the load L attached to the pulley A में लोड अटैच्ड है दैट इज x, देखो डिस्प्लेसमेंट x होगा, डिस्टेंस x, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड इक्वल्स टू x, द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द एक्सेल ऑफ पुली B, जो एक्सेल में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है पुली B में, पुली B का एक्सेल कौन सा, ये वाला, तो ये एक्सेल में कौन सा स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दिस स्ट्रिंग, तो इसके लिए कितना लिफ्ट होगा, ट्वाइस 2x, 2 into x, the string connected to the axle of pulley C में जो string connected है इसके लिए कितना होगा 2 into 2x, right? Hope you can understand. And the end of the string passing over the fixed pulley D moves up by a distance C, D में ये वाला string connected है कितना ऊपर जा रहा है 2 into 4x, this one 4x, 2 into 4x that is 8x, this 8x will be T3 में जितना जा रहा है इधर ही होगा 8x, so मतलब एफर्ट मूव्स कितना होगा, एफर्ट का जो मूवमेंट होगा वो 8x होगा, दैट इज
2 to the power 3x. So the effort moves by a distance 2 to the power 3x, that is displacement due to effort will be 2 to the power 3x. देखो mechanical advantage जो था, what we have seen, that was 2 to the power n, and velocity ratio, this will be also 2 to the power n, 2 to the power n into जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना जितना अगर 5 होता है तो n मतलब नंबर ऑफ पुलीज. लेट्स see the velocity ratio, distance moved by the effort d by upon e, and distance moved by the load dl. Hence 2 to the power 3x by x will be 2 to the power 3, that we have already discussed. এখানটায় বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে, বাদ মুছে দে এটা, কেটেই দেবো তো. আচ্ছা এখন কাট, দাঁড়া. এটা ভুল বলে ফেলেছিলাম. The velocity ratio will be 2 to the power n. See, in case of combination of pulleys, where one pulley is fixed and other pulleys are movable, in that case mechanical advantage will be 2 to the power n, velocity ratio will be 2 to the power n, both are same. Hence the efficiency will be 1 or 100%. That means it's an ideal machine. Note that the efficiency of this arrangement is 100% only in ideal situation. Ideal situation अगर होगा तो in actual practice में क्या होता है, both one, the weight of the pulleys and string, and number two, the friction between the bearings of the pulleys reduce the mechanical advantage, and so the efficiency becomes less than 100%. In our next video we will discuss the second part of combination pulleys. Thank you.